ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. नमस्कार। Today we read chapter 90 of the Ayodhya Kandam, which has 24 verses. Leaving the party a couple of miles away on this side of the hermitage, Bharata enters it with Vashishta and Shatrughna. After exchanging of compliments between sage Vashishta and Bharatwaja, Bharata bows down at the feet of the latter, who inquires of his health and seeks to know his mind about Sri Rama. Bharata thereupon remorsefully apprises him of his intention to bring Rama back from the forest and questions him about his whereabouts. To this the sage replies that Sri Rama was sojourning on Mount Chitrakuta and advises Bharata to see the later the following morning. आज हम नवतितम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 24 श्लोक हैं। भरत और भारद्वाज मुनि की भेंट एवं बातचीत तथा मुनि का अपने आश्रम पर ही ठहराने का आदेश देना। भरद्वाज आश्रमं गत्वा क्रोशाद् एव नरऋषभः जनं सर्वम् अवस्थाप्य जगाम सह मन्त्रिभिः। पद्भ्याम् एव तु धर्मज्ञो न्यस्तशस्त्रपरिच्छदः वसानो वाससि क्षौमे पुरोधाय पुरोहितम्। धर्म के ज्ञाता नरश्रेष्ठ भरत ने भारद्वाज आश्रम के पास पहुंचकर अपने साथ के सब लोगों को आश्रम से एक कोस इधर ही ठहरा दिया था और अपने ही अस्त्र शस्त्र तथा राजोचित वस्त्र उतारकर वहीं रख दिए थे। केवल 2 रेशमी वस्त्र धारण करके पुरोहित को आगे किए वे मंत्रियों के साथ पैदल ही वहां गए। Having reached the precincts of the hermitage of Bharatwaja and leaving all his people only a couple of miles away on this side of the hermitage, so as not to cause disturbance to the hermits living peacefully there, Bharata, a jewel among men, for his part, who knew what is right, proceeded further with his counselors on foot, placing sage Vashishta, his family priest, ahead and putting on only a pair of silk garments, which is a lion cloth and outer covering, laying aside his weapons and ornaments, etc. ततः सन्दर्शने तस्य भरद्वाजस्य राघवः मन्त्रिणः तान् अवस्थाप्य जगाम अनुपुरोहितम्। आश्रम में प्रवेश करके जहां दूर से ही मुनिवर भारद्वाज का दर्शन होने लगा, वहीं उन्होंने उन मंत्रियों को खड़ा कर दिया और पुरोहित वशिष्ठ जी को आगे करके वे पीछे पीछे ऋषि के पास गए। Bidding the aforesaid counselors stay behind, the moment the celebrated Bharatwaj was clear in sight, Bharata, the scion of Raghu, then proceeded at the heels of Vashishta, his family priest. वशिष्ठम् अथ दृष्टैव भरतः सञ्चलासनात् तूर्णं शिष्यान् अर्पन्। ब्रुवन्। महर्षि वशिष्ठ को देखते ही मां तपस्वी भारद्वाज आसन से उठ खड़े हुए और शिष्यों से शीघ्रता पूर्वक अर्घ ले आने को कहा। At that very sight of Vashishta, Bharatwaj, who practiced great austerities, at once hurriedly rose from his seat, asking his pupils to fetch water to wash the hands of the distinguished guests. समागम्य वसिष्ठेन भरतेन अभिवादितः अबुध्यत महातेजाः सुतं दशरथस्य तम्। फिर वे वशिष्ठ से मिले। तत्पश्चात भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महातेजस्वी भारद्वाज समझ गए कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। Uniting in embrace with Vashishta and greeted by Bharata, the highly glorious sage inferred him to be a son of Dasharatha. ताभ्याम् अर्घ्यं च पाद्यं च दत्त्वा पश्चात् फलानि च आनुपूर्व्यात् च धर्मज्ञः पप्रपच्छ कुशलं कुले।
धर्मज्ञ ऋषि ने क्रमश वशिष्ठ और भरत को अर्घ्यपात तथा फल आदि निवेदन करके उन दोनों के कुल का कुशल समाचार पूछा। Offering to the two guests in order of seniority, one after the other, water to wash their hands and feet with, and also fruits afterwards, Bharatwaj, who knows what is right, made inquiries concerning the welfare of the family of each. अयोध्यायां बले कोशे मित्रेष्वपि च मन्त्रिषु जानन् दशरथं वृतं न राजानम् उदाहरत्। इसके बाद अयोध्या सेना खजाना मित्र वर्ग तथा मंत्रिमंडल का हाल पूछा। राजा दशरथ की मृत्यु का वृतांत वे जानते थे, इसलिए उनके विषय में उन्होंने कुछ नहीं पूछा। And he also asked whether all was well with the city of Ayodhya, the army, the exchequer, the king's allies and ministers. Knowing as he did Dasharatha to be dead, he made no inquiries concerning the king. वसिष्ठो भरतश्चैनं पप्रच्छतुः अनामयं शरीरे अग्निषु शिष्येषु वृक्षेषु मृगपक्षिषु। वशिष्ठ और भरत भी महर्षि के शरीर, अग्निहोत्र, शिष्य वर्ग, पेड़ पत्ते तथा मृग पक्षी आदि का कुशल समाचार पूछा। Vashishta and Bharata in return inquired whether all was well with his body, sacred fires, pupils, trees, deers and birds. तथेति तु प्रतिज्ञाय भरद्वाजो महायशाः भरतं प्रत्युवाच इदं राघव स्नेह बंधनात्। यशस्वी भरद्वाज सब ठीक है ऐसा कहकर श्री राम के प्रति स्नेह होने के कारण भरत से इस प्रकार बोले। Having admitted that it was so, the highly illustrious Bharatwaja, for his part, replied to Bharata as follows, impelled as he was by the ties of affection that he bore to Sri Rama, a son of Raghu. किमिह आगमने कार्यं तव राज्यं प्रशासतः एतद् आचक्ष्व सर्वं मे नहि मे शुध्यते मनः। तुम तो राज्य कर रहे हो ना, तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये सब मुझे बताओ, क्योंकि मेरा मन तुम्हारी ओर से शुद्ध नहीं हो रहा, मेरा विश्वास तुम पर नहीं जमता है। What motive could you have in coming all the way to this place, busy as you must be ruling the kingdom of Ayodhya? Please tell me all this, for my mind is not getting cleared of doubts about your intentions towards Sri Rama. सुषुवे यममित्रघ्नं कौशल्या आनन्दवर्धनं भ्रात्रा सह सभार्यो यश्चिरं प्रव्राजितो वनम्। नियुक्तः स्त्रीनिमित्तेन पित्रा यो असौ महायशाः वनवासी भवेतीह समाः किल चतुर्दशः। कश्चिन्न तस्य अपापस्य पापं कर्तुमिच्छसि अकंटकं भोक्तुमना राज्यं तस्य अनुजस्य च। जो शत्रुओं का नाश करने वाला है, इस आनंदवर्धक पुत्रों को कौशल्या ने जन्म दिया है तथा तुम्हारे पिता ने स्त्री के कारण जिस महायशस्वी पुत्र को 14 वर्ष तक का वन में रहने की आज्ञा देकर उसे भाई और पत्नी के साथ दीर्घ काल के लिए वन में भेज दिया है, इस निरपराध श्री राम और उसके छोटे भाई लक्ष्मण का तुम अकंटक राज्य भोगने की इच्छा से कोई अनिष्ट तो नहीं करना चाहते हो? Seeking to enjoy the kingdom rightfully belonging to Sri Rama without any thorn in your side, I hope you do not intend to do any bodily harm in this forest to Lakshmana, his younger brother, and the highly illustrious Prince Sri Rama himself, the destroyer of enemies and the promoter of joy in this world, whom Kaushalya gave birth to, and who has been urged, they say, by his father through the instrumentality of the latter's wife, Kaikeyi, in the following words: dwell in the forest for 14 years, was exiled to the forest with his younger brother Lakshmana and his wife Sita to the forest for a long term. एवं उक्तो भरद्वाजं भरतः प्रत्युवाचः पर अश्रुनयनो दुःखात् वाचा संसज्जमानया। भारद्वाज के ऐसा कहने पर दुख के कारण भरत की आंखें डबडबा आईं। वह लड़खड़ाती हुई वाणी से उनसे इस प्रकार बोले,
Spoken to as aforesaid, Bharata, they say, replied as follows in a faltering tone, with tears flowing from his eyes through agony. हतोऽस्मि यदि मामेवं भगवान् अपि मन्यते मत्तो न दोषमाशंके मैवं माम् अनुशादिहि। भगवान, यदि आप पूज्यपाद महर्षि भी मुझे ऐसा समझते हैं, तब तो मैं हर तरह से मारा गया। ये मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि श्री राम के वनवास में मेरी ओर से कोई अपराध नहीं हुआ, अतः आप मुझसे ऐसी कठोर बात ना कहें। I am ruined if your holiness too, who is omniscient, reckons me as such. I cannot even think of any harm having proceeded from me to Sri Rama. Therefore, please do not say much harsh words to me anymore. न चैतदिष्टं माता मे यद ओचन् मदन्तरे न अहम् एतेन तुष्टश्च न तत् वचनम् आददे। मेरी आड़ लेकर मेरी माता ने जो कुछ कहा या किया, ये मेरे अभिष्ट नहीं है। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ और न माता की इस बात को स्वीकार की करता हूँ। Neither is that which my mother said during my absence at my maternal grandfather's agreeable to me, nor am I pleased with that which she has done, nor again have I even now accepted her word, asking me to enjoy the sovereignty of Ayodhya. अहं तु तं नरव्याघ्रम् उपयातः प्रसादकः प्रतिनेतुम् अयोध्यायां पादौ च अस्य अभिवन्दितुम्। मैं तो उन पुरुष सिंह श्री राम को प्रसन्न करके अयोध्या में लौटाने लाने और उनके चरणों की वंदना करने के लिए जा रहा हूँ। I have, on the other hand, come to take that tiger among men back to Ayodhya after having propitiated him and also to bow down at his feet. तं मामेवं गतं मत्वा प्रसादं कर्तुमर्हसि शंस मे भगवन् रामः क्व सम्प्रति महीपतिः। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ, ऐसा समझकर आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। भगवान, आप मुझे बताइए कि इस समय महाराज श्री राम कहाँ हैं? Believing me as such to have come with the aforesaid intention, you be gracious to me. Also, kindly tell me, Venerable Sir, where Emperor Rama may be at present. वसिष्ठादिभिः ऋत्विग्भिः याचितो भगवान् ततः उवाच तं भरद्वाजः प्रसादात् भरतं वचः। इसके बाद वशिष्ठ जी आदि ऋत्विजों ने भी ये प्रार्थना की कि भरत का कोई अपराध नहीं है, आप इन पर प्रसन्न हो। तब भगवान भरद्वाज ने प्रसन्न होकर भरत से कहा, Solicited by the priests who had obviously joined the party in the meantime, headed by Vashishta, the venerable Bharatwaja thereupon graciously spoke to the celebrated Bharata as follows. त्वयि एतत् पुरुषव्याघ्र युक्तं राघव वंशजे गुरुवृत्तिर्दमश्चैव साधूनां च अनुयायिता। पुरुष सिंह, तुम रघुकुल में उत्पन्न हुए हो, तुम में गुरुजनों की सेवा, इंद्रिय संयम तथा श्रेष्ठ पुरुषों के अनुसरण का भाव होना उचित ही है। Service to your elders as also self-control and walking in the footsteps of the virtuous, this is worthy of you, descended as you are in the line of the Raghu, O tiger among men. जाने चैतन् मनस्थं ते दृढीकरणमस्त्विति अपृच्छं त्वां तवात्यर्थं कीर्तिं सम अभिवर्धयन्। तुम्हारे मन में जो बात है उसे मैं जानता हूँ, तथापि मैंने इसलिए पूछा है कि तुम्हारा ये भाव और भी दृढ़ हो जाए तथा तुम्हारी कीर्ति का अधिकाधिक विस्तार हो। I already knew by my yogic power what existed in your mind. All the same, I questioned you as though I knew nothing, in order that your resolution may be strengthened and in order further to enhance your renown beyond measure. जाने च रामं धर्मज्ञं स सीतं स लक्ष्मणं अयं वसति ते भ्राता चित्रकूटे महागिरौ। मैं सीता और लक्ष्मण सहित धर्मज्ञ श्री राम का पता जानता हूँ।
ये तुम्हारे भ्राता श्री रामचंद्र जी महापर्वत चित्रकूट पर निवास करते हैं। I know where Sri Rama, who knows what is right, is staying, accompanied by Sita and followed by Lakshmana. Your brother is dwelling at present on the great Chitrakuta mountain. स्वस्तु गन्तासि तं देशं वस अद्य सह मन्त्रिभिः एतं मे कुरु सुप्रज्ञ कामं कामार्थ कोविद। अब कल तुम इस स्थान की यात्रा करना, आज अपने मंत्रियों के साथ इस आश्रम में ही रहो। महाबुद्धिमान भरत, तुम मेरी इस अभिष्ट वस्तु को देने में समर्थ हो, अतः मेरी ये अभिलाषा पूर्ण करो। You will certainly proceed to that area tomorrow. Halt here with your counselors today. Grant this desire of mine, O highly sagacious prince, knowing how to fulfill the desired object of your friends and well-wishers. ततेत्येव मुदार दर्शनः प्रतीत रूपो भरतो अब्रवीत् वचः चकार बुद्धिं च तदाश्रमे तदा निशानि वासाय नराधिप आत्मजः। तब जिनके स्वरूप एवं स्वभाव का परिचय मिल गया था, उन उदार दृष्टि वाले भरत ने तथास्तु कहकर मुनि की आज्ञा शिरोधार्य की तथा उन राजकुमारों ने उस समय रात को उस आश्रम में ही निवास करने का विचार किया। Thereupon Bharata, who had a broad outlook and whose reality as a devotee of Sri Rama had now come to be known, replied as follows: So be it. Nay, the prince forthwith made up his mind to stay in that hermitage during the night. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 90तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 90वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 90 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyam. Dhanyavad. धन्यवाद।